गुड इवनिंग. हाउ यू फीलिंग टुडे? आज का क्या फोकस है? मोल कॉन्सेप्ट इन स्टोइकियोमेट्री, या फिर आप लोग बोलते हैं ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो उसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पलर के सवाल करने वाले हैं. और इफ यू स्टिक अराउंड टिल द एंड, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. हम लोग एक ऐसा सवाल करेंगे जो बहुत अतरंगी है, एंड हो सकता है कि एडवांस में ऐसे सवाल आ जाए. वी दिस इज द टोन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट मंथ, मतलब अंटिल एटलीस्ट एंड ऑफ फरवरी तक. मैं आपको 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स का रिवीजन कराता रहूंगा. दिस इज गोना बेनिफिट एवरीबॉडी जिन्होंने 11th अभी खत्म किया है और वो भूल गए शुरुआत में क्या किया था. ऑल्सो जो लोग अभी जेई दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि मैंने एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई सॉ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री बट डायरेक्टली फ्रॉम द एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक. तो ये एग्जाम्पलर करने का फायदा ये है कि आप सोचने का तरीका डेवलप करें. इसमें कुछ सिंगल करेक्ट होंगे, कुछ मल्टीपल करेक्ट होंगे, ऑल काइंड ऑफ स्टफ. एंड टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज जेई एडवांस का एग्जाम भी आ रहा है और जेई एडवांस की तैयारी भी पैरेलली करनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में करते हैं. सो विल सॉल्व वन और टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, मोस्ट लाइकली कहीं नहीं देखे होंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ यू फीलिंग? आई अगर आपने अभी जस्ट अभी जैन में एग्जाम दिया था, आई अंडरस्टैंड थिंग्स आर वेरी फ्रेश, वेरी रॉ, बट या अगर आप 11th में है, hey, welcome, let's get started right away. Either way, it's going to be beneficial, it's going to be a fun session. If you're from the NEET channel, welcome. आपके लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि देखो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आर स्टिल क्वेश्चंस, राइट? सो व्हिच विल हेल्प यू. एमसीक्यूज यहाँ पे हैं. मैंने सब्जेक्टिव सेशंस किए अभी नीट पे जस्ट बिफोर दिस एट 4:30. आई डिड एटॉमिक स्ट्रक्चर के. सो आई टोल्ड दोस गाइस, भाई आप यहाँ पे भी देख सकते हो, बिकॉज आई एम डूइंग नीट सब्जेक्टिव ऑन द नीट चैनल. Sorry, NCERT subject on NEET channel, and exemplar यहाँ पे मैं कर रहा हूँ along with some advanced things. So if you want to check out subjective questions, go on to the Aakash by NEET channel. You can get that there. मेरी आवाज साफ आ रही है, right? Hi, Devanshi, look at that. NEET people here. That's beautiful. Miss Lyrical, good to see you. Priyanshu, वाह, NEET के दोस्त and JEE के दोस्त, भाई भाई, बहन बहन, awesome. Rek, you are wonderful, Rek. Sanvi, good to see all of you. Good to see all of you here. That's a very, very nice way of thinking, Sanvi. Lovely, lovely. So yeah, back to the grind again. आज सुबह ही आया आपका रिजल्ट एंड यूर बैक हियर. इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. मिस लिरिकल, सी तैयारी की जरूरत होती है, राइट? आई एम नॉट सेइंग तैयारी आपने की नहीं की, आई डोंट नो, बट डिप्रेस होने का क्या फायदा है? या द फैक्ट दैट यू हियर इज द बिग डील, कि आप मेरे साथ यहाँ पे आके यू आर विलिंग टू यू नो जस्ट गेट अप एंड गो अगेन. सो देयर वाज अ डायलॉग फ्रॉम द क्रिस्टोफर नोलन की मूवी बैटमैन. Why do we fall, Bruce? So we can pick ourselves up and go again, or something like that. It was a very nice dialogue. I probably ruined it by saying it the way I did. But yeah, that's the point, right? You got to keep trying. खैर, let's try this, yeah? छोटे छोटे सवाल शुरुआत से आएंगे, एग्जाम्पलर के सारे सवाल हैं, and then we'll ramp it up. And towards the end, we'll do very interesting question. मजा आएगा. एडवांस का सवाल है, but बहुत मजा आएगा करने में. Let's start off very interesting question. Right? इस चीज बारे में ज्यादा सवाल मैंने देखे नहीं है, मतलब कि हो सकता है आ जाए. That's the thing. If you haven't seen something for a long time in JEE, then it's a very high chance कि आ जाए. The concept of precision and accuracy. हो सकता है कि JEE मेन के सिलेबस से हटा भी दिया some of the things, but JEE Advanced में maybe they won't test this directly, but who knows. Two students performed the same experiment. We're starting things off, okay, separately, and each one of them recorded two readings of mass, which are given below. Correct reading of mass is this. Actual mass ये है. On the basis of given data, mark the correct option out of the following statements. These are the readings, okay. तो पूछा जा रहा है कि क्या ये वैल्यूज एक्यूरेट हैं और क्या ये प्रिसाइज है? Yeah, both of these things. Are they accurate? Are they precise? Or are they both? What do you think? Yes. I'm not gonna. You guys and your names, guys. Like seriously. Yeah, I was on Discord just before this. You're right. 7:15. Yeah, sure, Sanvi. Most welcome. Sure. Sure. Thank you so much for being around here. Hi, Yash. How about this one? Hello, Naina. इसको try करें. Shall we try this question out? What is the meaning of precision and accuracy? Accuracy मतलब कि close to this value, right? और precision मतलब मैंने जितनी बार किया, I got the same answer. So if this is the target and I'm going here, all my values are here. These are all precise but not accurate. ठीक है? Whereas here, if I have this thing, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, so these are kind of accurate but not precise because एक जगह नहीं जा रहा है. Is that idea fine? Precise accuracy का general idea. खैर, B is precise while A is accurate. Okay, B is precise while A is accurate. Now here's an interesting thing. This is अगर आप average लोगे, if you take the average of both of these, average दोनों का 3 ही आ जाता है, right? See that, ध्यान से. Since average दोनों का 3 आ रहा है, तो both are accurate. Do you see that? It's okay. $89 NIT Trichy. That's a lot of dollars. It's okay, man. It's okay. It's okay. कोई tension नहीं है NIT Trichy. Listen, we gotta try our best.
And if you guys want to chat, we can chat on Discord. Okay. Just now Fakir ne bola ki let's go ahead and Fakir sahab, the guy who owns the Discord, so he's like Sunday ko let's do a chat with students. We'll do that there. Since here मैं पढ़ा रहा हूँ, let's focus on this. We want to generally chat, we'll talk on Discord, on Telegram, ping me on I Teach Chem. That's my ID on both those places, yeah, on Discord and on Telegram. हम लोग आराम से वहाँ पे बात करेंगे. In fact, I spent a large part of this morning from around 5:30 to 10:30 just sitting on Discord and talking with you guys, figuring out what the mode is and all that. So interestingly, दोनों जो है, see here, so this first one is plus or minus 0.01. Here is plus or minus 0.05. ठीक है? So now here's the thing. They are both accurate for sure. Precise, let's say NCERT बोल रहा है कि दोनों precise हैं, but you take the error. ना error कितना है? This is 0.01/3. इसका error कितना है? 0.05/3 into 100. Percentage अगर निकालो इसका कितना आ जाएगा? What is this percentage? What is this percentage according to you? बताओ. This is 1/3%, which is 0.33%. This is 5/3%, which is 1 point something percent. Now, generally, if the error is less than 5%, then chill है ना, precise ही है and accurate. That's the ballpark thing we're going with. The answer doesn't matter in this one, okay? The answer is immaterial. I want you to understand कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है? इसमें दोनों precise and accurate है. Is the answer that NCERT has given you? I'm telling you what answer NCERT has given you, and but it's important to realize कि how do you figure out someone's accurate or not? Average निकालो, average अगर same मिल रहा है तो accurate है. That's it. ठीक है? Very weird question. मुझे अजीब सा लगा इसलिए मैंने सोचा I'll bring this to you. 1.6, yeah, exactly, Sami, exactly. Miss Lyrical, yeah. Jepeline, how you doing? How you doing? Second option, yeah, yeah. Next question. Here's this one. The density of a solution is 3.12 gram per milliliter. The mass of 1.5 ml solution is in significant figures is what? Significant figures में mass कितना है? Try करो इसको. This is a fun question, and this should tell you something. By the way, engineering में ना, this is something my physics teacher told me very early on. It was a very nice thing for him to say. कि if you try and measure something, like say if you're trying to measure, say, the nail कितना बड़ा है with a vernier caliper, I mean obviously not one that's attached to your hand. When you cut off the nail, vernier caliper से measure करो. So कहाँ तक आप measure करोगे, right? Depends on what you want that process for. Like, okay, I'm measuring this nail maybe to 3D print another nail. So I need some amount of precision. Okay, I need to go to 1 decimal, 2 decimal, 3 decimal. But beyond 2 or 3 decimals, it's pointless, right? I can go calculate to 9 decimals, but no one's going to make it accurate up to, not precise, sorry, accurate up to that 9 decimals. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आइडिया ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है? अगर आपको जो है नंबर्स दिए हैं 3.12 and mass is 1.5, मतलब your final answer should have two significant figures. That is what you have to figure out in this question. Okay, so out of these you can eliminate actually. कुछ eliminate हम लोग कर सकते हैं. Elimination से मुझे लग रहा है कि आंसर 1 हो जाएगा. मुझे सॉल्व करना भी नहीं है, सॉल्व करना ही नहीं है. Ria, yeah, it's okay, Ria, it's okay. Don't see question with precision accuracy like acquaintance. Yeah, Sanvi, yeah. Ria, it's okay, don't worry about it. ये पहला सवाल थोड़ा weird था. I know, precise नहीं था because whatever. But 5% rule के हिसाब से you can say कि ठीक है, it is precise and accurate दोनों है, ठीक है. So the answer for this one, without even solving it, is going to be option A. Do you see that? Right? Just because of this. जिसके सबसे कम significant figure with, this is going to be your sort you call it पलड़ा भारी करने वाला. If you want to actually solve it, you can. Mass is rho into V, which is 3.1 to 1.5. You will get something. Yeah, इसको add करो 4.68 कुछ आ जाता है. Right? Now this 4.68 is not the answer. You got to go up to this 2 decimal thing. So इसको round up करो. This becomes 4.7. That is the key in this question. Not the math. Not the math. Hey Priyanshu. Hey Zaki. What's happening? Lyrical Yash. Yeah. Which is why A should be the answer. So, and this is a learning for everybody giving JEE, क्योंकि JEE में न्यूमेरिकल एंट्री आते हैं. न्यूमेरिकल एंट्री में सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना, ठीक है? राउंडिंग अप, राउंडिंग डाउन, यही तो पूरा गेम है यार 5 सवालों में. अनलेस यू हैव नंबर ऑफ आइसोमर्स, देन जो राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन. अगर फिजिकल का सवाल है तो करना पड़ सकता है. एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली. एंड दिस थियरी इज इन एनसीईआरटी. मैं कुछ बना नहीं रहा हूं. दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ना, ठीक है? Sulfuric acid reacts with sodium hydroxide as follows. Okay, fun reaction है. 1 liter of sulfuric acid solution is allowed to react 1 liter of 0.1 molar. अच्छा, 0.1 molar दोनों sodium hydroxide solution. The amount of sodium sulfate formed and its molarity in solution obtained is wonderful question. Basics clear हो जाएंगे इसको करने से आपके titration के, molarity के, दोनों चीज के, ठीक है? Try it out. Let's try this out. Stoichiometry का बहुत सही सवाल, बहुत straightforward basic सवाल. So as I said, अगर आप 11th में रिवाइज कर रहे हैं आपके लिए यूजफुल है. अगर आप 12th में भी जेई दे के आए हैं, सेकंड ईयर ट्राई करें, तो आपके लिए यूजफुल है. अगर आप 10th में हैं, अगर आप 10th से 11th जा रहे हैं, तब भी इट्स फन. बट आई थिंक उन लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा. आई डोंट थिंक 10th का कोई होगा यहाँ पे. बट या, रिया सेज 3. ओके, कूल, नाइस, थैंक्स रिया. वेरी क्विक आंसर, लवली रिया.
Riya says 3. What about the rest of you? अब आपको क्या लगता है? Miss Lyrical, आपको क्या लगता है? Yeah? Try this question out. See, what's the idea here? Balance reaction भी दी गई है. So मतलब 1 mole of this reacts with 2 moles of that. है ना? So moles कितना है? First get moles. How do you get moles? Mole is m into v. We will not use normality. If you are familiar with normality, use कर लो. यहाँ जरूरत नहीं है. अगर आप चाहो तो कर सकते हो. Balance equation ऐसे जरूरत नहीं है. So moles कितने हो गए इसका? I will say it is 0.1 mole, right? 0.1 mole of this and 0.1 mole of that as well. दोनों के 0.1 mole है. But एक मोल के लिए मुझे 2 मोल NaOH चाहिए. 2 मोल NaOH तो है ही नहीं. मेरे पास 0.1 मोल है, तो लिमिटिंग रिएजेंट एक हो जाएगा. मतलब कुछ रिएक्ट करे, कुछ बच जाएगा. कौन सा लिमिटिंग हो जाएगा? है ना? कौन सा लिमिटिंग होगा बताओ? NaOH पूरा यूज हो जाएगा, H2SO4 आधा बच जाएगा. ठीक है, कूल. हाँ, yes, Mr. Asur. I'm going to call you Mr. Asur, although I don't want to call you Asur. I'm going to call you Sur. You know, by the way, Sur और असुर में क्या फर्क होता है? सुर और असुर, मतलब देवता और असुर जो बोलते हैं ना, that's Sur and Asur. So interesting, somebody who follows the Vedas is called Sur, and somebody who decries the Vedas is called Asur. That's interesting because your name is that. But I'm going to call you Sur anyway. I don't want to call you Asur. That's rude. Yeah. 11th physics units. Yes, units dimensions. Exactly. Sulfuric acid gets consumed fully. So, sulfuric acid gets left behind. NaOH gets consumed fully. ठीक है? क्यों? ये समझ में आ रहा है? H2SO4 is, left over. NaOH gets used up because for each mole of H2SO4, 2 moles of NaOH are used. इसका भी ऐसे समझ सकते हो ना? ये देखो, 2H plus are being furnished, and यहाँ पे कितना है? 1 OH minus, yeah, per mole of this. तो इसमें ये आइडिया यही है कि if there is 0.1 mole of H2SO4, that means I have 0.2 mole of H plus ions, and I have 0.1 mole of OH minus ions. That is the whole thing ना. ये क्या है? यही तो हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन में. This gets completely used up. Okay. And how much you get? I get same amount. I get 0.1 mole, yeah, of this guy being formed over here. By 2 because of the same thing. Sur also means rhythm. Yeah, Sura. Sura means, someone, and Sur means rhythm. You're right. भाई साहब कोई आंसर तो बताओ, क्या हो रहा है? Units. You haven't answered for this answer. Yes, Riya, please give me the answer to this. Miss Lyrical, Jepoline, इसका आंसर तो बताइए. So if I have 0.1 mole by 2 of Na2SO4 formed, how do I get molarity? I need to get कितना बचा है और molarity क्या है? Molarity क्या है? Molarity definition is moles divided by total volume, right? But total volume double हो गया है. Total volume 1 liter plus 1 liter था. So you add it up together. So this is the mole, this is volume. Okay, so you get 0.1 divided by 4. 0.1 by 4 is 0.025, जो बहुत शुरुआत में जल्दी में आंसर दे दिया किसी ने. Right? Yeah, simple, right? Simple, easy question. Let's move on. Lovely. Lyrical जी, 0.1 मोल पर लीटर नहीं होगा, 0.1 by 2 मोल होगा Na2SO4 का फॉर्म. ठीक है? Any doubts on this, Lyrical? I can explain again. I'm not in any hurry. बिल्कुल आराम से करेंगे, right? Use this time because usually इतने आराम से और प्यार से कोई समझाने वाला है नहीं इंटरनेट पे. People are in a hurry. I'm not in a hurry. If there's something you don't follow, please tell me. I'll help you out. I'll just revise the whole question एक बार, right from the top, right? Right from the top. So this is by the way, this can have more than one correct answer. Sorry, मैं आपको बताया नहीं. ये तो moles हो गया, but mass कितना हुआ? 0.05 into this 7.10 ग्राम. तो ये दोनों चीज सही हो गया. ठीक है? एग्जाम्पलर में एक से ज्यादा मोर देन MSQ होता है ना, एक से ज्यादा सही भी हो सकता है. तो दोनों 2 और 3 दोनों करेक्ट होगा. ठीक है? Na2SO4 मतलब 46 plus 32 plus 64. Explain one more time. Sure. Guys, did you follow कि 7.1 ग्राम ही होगा? दो एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, राइट? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मास भी है, अमाउंट एंड मोलैरिटी दोनों निकालना था. या ओके. मिस लिरिकल एंड जेपोलिन, एक्सप्लेन अगेन. ठीक है? ओके, लेट्स राइट दिस डाउन हियर सेपरेटली. H2SO4 प्लस NaOH gives me Na2SO4. मैंने अभी बैलेंस नहीं किया, बट रिएक्शन में ऑलरेडी बैलेंस था. ठीक है? I have 0.1 mole of this. I also have 0.1 mole of this. इसका कितना बढ़ेगा? How much of this will get formed? Now look at this ratio. It's 1:2. मतलब for every mole of this, you need 2 moles of this, right? So if I want to use up all of this, I don't have enough of this. If I want to use all of this, I need 0.2 moles of this, which I don't have. So hence, this gets fully used up. If this gets fully used up, say 0.1 gets used up, तो इसका कितना होगा? Cross multiply, right? 0.1 into 1 by 2. This is the same amount of Na2SO4 that's going to be formed. Why? Because of the ratio here. There's one here, there's one here. That's all I did. ठीक है? Jepoline, Miss Lyrical, Riya, everybody else who's just joined in right now. So 0.1 by 2 moles of Na2SO4 is formed. What is the mass? 0.1 by 2 into
46 plus 32 plus 64, that is 96 plus 46, ये कितना हो गया? How much is this boss? बताओ थोड़ा सा. 130, 142 into 0.1 by 2, that is 71, है ना? Sorry, 7.1, not 71. By 2, 71 हो जाएगा. Into 0.1, 7.1 gram हो जाएगा. So you have two answers, 7.1 gram. Why 2 liters? Because I added both of these. ये तो 0.1 mole मैं लिखा, but I actually have 0.1 molar and 1 liter. I'm mixing both of these, plus 0.1 molar and 1 liter. दो liquids एक एक liter बना के 2 liter बन गया, है ना? So this is why I get 0.1 by 4, which is 0.025. ठीक है? Cool. All right. Hey, that's a wonderful name. If you are from Discord, भाग जाओ यहाँ से. आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है. The only people I want here are people who encourage each other. अगर आपको गाली गलौज करना है, टाइम पास करना है, बहुत जगह है आपके लिए. कहीं और जाइए. ठीक है? All right, lovely. Let's go. NA is 23 or 21? सानवी, NA is 23. सानवी, कभी भी डाउट हो ना तो तुरंत open up the periodic table. कोई, there is no shame in this. Please do it. Absolutely, you must do it. ptable.com, आपको खोल के दिखाई देते हैं ना. No harm in this. Yeah. Don't worry about what people are saying. कोई कुछ भी कर रहा है. And when you are trying to learn something, you gotta learn it inside out, right? So it's a good question that you asked me. How do I know if it's ये नंबर है, ये नंबर है? Periodic table खोलो, सोडियम पकड़िए. मैंने Na पकड़ा, यहाँ पे कहाँ है? मास दिख रहा है कहीं पे? देखो, बड़ा बड़ा मास यहाँ लिखा है, 22.9 is our top, right? 23 is sodium. So this is a nice website. It's called ptable.com. You can open it up anytime. Keep it open, in fact, if you're trying to learn chemistry. It's a good thing to have. ठीक है? Let's go. No, it's okay. असुर भाई, मतलब सुर भाई, लोग होते हैं यार टाइम पास करने वाले, उसको भगा देंगे, उसमें क्या है? हम यहाँ बैठे हैं, डिलीट करेंगे, जिसको स्पैम करना है करने दो. Don't worry. Got you guys covered. All right, cool. Let's go. ठीक है? अगला सवाल देखते हैं. आप लोग फोकस करो each other पे. Yeah? I want you guys to support each other, no matter what. दुनिया आपके अगेंस्ट हो, you support each other so that you rise above इस सब गंदगी से आप लोग ऊपर आए. This is more than one correct. Okay. Which of the following solutions have the same concentration? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है. ये वाले में मैं चाहता हूं आप लोग खुद ट्राई करें. मैंने आपको थोड़ा हेल्प किया लास्ट वाले क्वेश्चन में. ये वाला आप खुद ट्राई करिए. Yes, Riya. Thank you, Riya. Lovely. Good job. All right, Sanvi, Miss Lyrical Jeopardy. That's good. Let's try this one out. इसको ट्राई करते हैं. Let's try this one out. How do you start this question? Same concentration. Concentration वही है ना, मोल पर लीटर. मोलैरिटी ही निकालना है आपको. You have to basically do molarity, right? I could take concentration many units. Let's do by molarity because mole दिया है, mass और volume दिया है. What is this? This is mole of solute divided by volume of solution in liter. Standard definition. इसके हिसाब से आप करके देखो, ट्राई देखो. Molarity. Emlon, good to see you here. Last आप मिले थे हम जब हम लोग वो कर रहे थे, लाइव सेशंस कर रहे थे जेई वाले. आपका पहला सेशन था क्या? I remember you had come in that first session वाली चीज when we did that. So yeah. What do you think? इसको कैसे किया जाए? Can you guys try this? It can have more than one correct answer. 1 and 2 लग रहा है तुक्का. सुर साहब तुक्का क्यों करेंगे? इसको तो आराम से कर सकते हैं. सुर साहब इसको तो आराम से कर सकते हैं, तुक्का क्यों करेंगे? अगर आपको मासेस चाहिए, देखो एनसीईआरटी में मासेस दिए नहीं है, बट आई विल टेल यू, आई एम हेल्पफुल. 23 इसका मास हो गया, पोटेशियम का 39 हो गया. ठीक है, टेक दैट इंफॉर्मेशन. सो एग्जाम्पलर में ना आप लोगों को ptable.com साइड में खोल के रखो, इट विल हेल्प यू आउट. ठीक है, अगर कैलकुलेटर है कैलकुलेटर भी रख लो, कोई टेंशन नहीं है. इसमें शायद जरूरत नहीं पड़ेगी. ये हो सकता है कि अगले वाले में एटॉमिक में शायद जरूरत हो कैलकुलेटर की, बट मोस्ट लाइक कैलकुलेटर जरूरत नहीं होगी. Emlon जीत में. अच्छा, really Emlon, you were there? That's lovely, Emlon. You're saying Sanvi says 1 and 4. Okay. Sura bhai sahab is saying 1 and 2. Sura ji, आप थोड़ा ट्राई करिए. Sura, just try it out. Okay. Try it out and some थोड़ा करो. देखो 0.5 मोल उसका मास क्या है. ठीक है. Let's do this. लिखते हैं, लिख के करते हैं, आराम से करते हैं. बहुत हमने भाषण दे दिया. So this one, first one, 20 gram by 40 gram कितना हो गया? This is 0.5 molar, है ना? How 0.5? Because ये 0.5 हो गया. और 1000 ml by 200, मतलब ये 5 times गया, ये गया. तो 5 तो नहीं हुआ, ये हो गया 2.5 हो गया ना? Because this is 1 by 2
एंड ये कितना है, दिस इज 5, सो 5/2 मतलब 2.5 मोलर हो गया ये पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला एग्जैक्टली सेम है, देखो 20 ग्राम बाय 40 ग्राम इज 0.5 मोल, है ना, और ये भी दिया है, ये तो डायरेक्टली जिसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सेम मोल्स सेम वॉल्यूम, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। 1 and 2 फॉर श्योर आर द सेम, व्हाट अबाउट 3, बिकॉज 1 and 2 आर सेम, 3 कैनॉट बी सेम, 4 कैनॉट बी सेम एज एनीथिंग एल्स, बिकॉज देखो दिस इज 1 मोल, राइट, 1 मोल इन 100 ml, 100 ml into 1000 ml by 1 liter। अभी मैं ये क्या कर रहा हूं, you want me to explain how, why am I doing 100 by 1 and all that, ये explain करता हूं मैं 1 सेकंड में, ठीक है। why did I multiply, see I don't like remembering formula, I just know ऊपर मोल होना चाहिए, नीचे वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। if I keep this in mind, ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम, बाकी will figure out। मोल ऊपर आ गया 20 ग्राम, I don't have मोल, बट मोल मुझे ऊपर चाहिए, मोल कैसे ऊपर आएगा, I divide by ग्राम पर मोल, इस यूनिट से मुझे डिवाइड करना है, इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर में 40 डाला, समझा, यू कैंसिल ग्राम आउट, मोल चला गया ऊपर, डिनोमिनेटर में क्या आया 200 ml, अब यार मुझे ml तो चाहिए नहीं, आई वांट लीटर, सो लेट्स पुट लीटर हियर, लीटर कैसे आएगा यहाँ पे इनटू 1000 ml, ठीक है, देयर यू गो, सो आई हैव कैंसिल यूनिट्स, कोई फॉर्मूला बग नहीं किया, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स आई हैव फिगर्ड आउट ये होगा इसका दिस थिंग, गुड, या ऑलराइट। मोल नहीं देखा, अरे अरे अरे, कोई नहीं, जेपलिन 1 2, यस प्रिया, लवली यू गाइस आर ब्रिलियंट, ठीक है, यही करना है, दिस व्हाट यू गॉट टू डू, दिस ऑल यू गॉट टू डू। इफ यू आर वंडरिंग 100,000 हाउ एम आई राइटिंग सो क्विकली, बिकॉज मैं दिमाग में कर रहा हूं, नो डाउट, राइट, डू इट लाइक दिस, ऐसे करोगे यूनिट्स के साथ कभी लाइफ में डाउट नहीं होगा, ट्राई दिस आउट। यस सानवी यू हैव आइडेंटिफाइड व्हाट टू फिक्स, एंड वो सबसे बड़ी चीज है सानवी, आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर फिगरिंग आउट कहां इंप्रूवमेंट करना है। A lot of students get frustrated, but वो solution oriented नहीं होते हैं, आप solution oriented हैं, which is extremely positive. You feel that there are clear areas where you feel you can improve. अब वो कैसे improve करना है, you'll figure it out because you've done the first and biggest thing, accepting कि कुछ है fix करने का and being humble about it. ठीक है, बहुत अच्छा आपने figure out किया, don't worry, we'll figure it out together. All right, great. 1 and 2 सही है, ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। This is 1 mole, ये कितना है, I don't know how much this is, but this is less than half mole, right? Because ये 39 plus whatever 1 plus 16 मतलब 56 हो गया, तो 56 by 20 मतलब whatever, it is not the same, हमको बस निकालना है same ना, 1 और 2 is the answer of this one. Let's move on, ये दोनों तो हट गए, let's go, ठीक है। Let's go to the next question very quickly। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें भी एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, ट्राई करो। 16 gram oxygen has same number of molecules as in 16 gram of carbon monoxide, 28 gram of nitrogen, 14 gram of nitrogen, 1 gram of water, H2. Try this out. Basic cheezein of mole concept, we can do this. Easy. Samyak, good to see you. Vedika, pranam from morning. That's good to see you, Vedika. Try this question out, please. Try this question out. Vedika, you did really well in this thing. You're one of those Dettol people, and you're here. That's amazing. Nice to see you. Are you focusing on the advanced, Vedika? Is that your goal? We're going to do an interesting question on JEE Advanced right towards the end of the session. I'm thinking closer to 6:20 or sorry 7. So it's closer to 7:15 or so. 15-20 minutes we'll get to that question. I feel it's a very nice question. I like it. I think you like it too. You guys like it too. Try it. We'll get to that. इस वाले का बताओ. Simple है. Try करके देखो तो. I feel it's doable. Oops. Where are we? हम लोग कहाँ गए? अरे मैंने कुछ क्लिक कर दिया. Just one second. I'm trying to get back to our screen where we have your chats. Okay. 2 says Sanvi. 3 says Priyanshu. Rhea is saying 4 and 3. Okay. Lot of different options. Emlon is also saying 4 and 3. 3 and 4. 4 and 3. 3 and 4. बहुत लोग बोलते हैं. Arul Kumaran ji is saying 2. Arul Kumaran, you're at 9. That's wonderful. But it could be more than one correct. Okay. ठीक है. देखते हैं. Let's see one by one क्या करना है. देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कितने मोल है? This is the first and the most important step, right? ऊपर क्या आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए? I don't want gram, I want mole. How do I get mole in the numerator? Divide by gram per mole. That's it, bro. You don't have to mug any equation. Trust me. Just by units and dimensions, you can figure this out. So this is 0.5 mole, right? अब 0.5 mole जो भी हो आंसर हो जाएगा. This is 16 gram of CO तो नहीं हो सकता है. This is not the same. It cannot be. 28 gram of N2. सबका मास लिखते हैं पहले. Let's write everyone's mass down. 44, 28, 2 gram. Okay. So I need to get 0.5. मतलब answer should be 14 and 1. That's it. After that the mass down खत्म, कुछ करना ही नहीं है. ठीक है. Good job everybody who said 3 and 4. People who did not say 3 and 4, don't worry. We'll get back to it. Good evening, Payal. Good to see you here. Miss Lyrical, good job. We had to get more than one correct answer, right? So the complete answer was 3 and 4. ठीक है. दोनों था.
Why? Because it was 0.5 mole and ये भी 0.5 mole है. 14 by 28 is 0.5 and 1 by 2 is also 0.5. All right, Sanvi. Yes, good job, good job. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following terms are unitless? Unitless. आसान लग रहा है क्या? कर लो ये. In fact, bro, same question came, but इसमें से एक ऑप्शन हटा दे. जेई मेन ने यही सवाल दिया और इसमें से एक ऑप्शन बदल लिया. मेरे इनकरेक्ट. Made your life easy. Exactly same question came, guys. Exactly same. Yeah. Yes, सुर साहब बोल रहे हैं 3 into 10 power 23 चाहिए. Exactly. Trick, Priyanshu. All right. Emlon is saying 3 and 4. Ria, 3 and 4. Yeah, you're right. Lyrical, Priyanshu, इसमें भी 3 and 4. Okay, सिर्फ 3, 4. हाँ यार, हो गया ना. यूनिट क्या होती है? लिख लेते हैं कि यूनिट. ये क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट. ये है मोल ऑफ सोल्यूट बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन. ये है मोल बाय मोल. मोल हो जाते हैं कैंसिल. मोल ऑफ व्हाट? सोल्यूट बाय टोटल मोल, है ना. बट फिर भी द मोल यूनिट गेट कैंसिल आउट. मास परसेंट क्या है? मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सोल्यूशन, एक्चुअली सॉल्वेंट नहीं है, माय बैड, सोल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, राइट. खैर, either way ग्राम गेट कैंसिल आउट. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सिमिलर चीज आई थिंक हैड कम ना. उसमें पूछा था टेम्परेचर से नीचे हो जाए. एग्जाम्पलर, आई मीन सॉरी, यहाँ लिखा है, वहां पे जेई में आया था व्हिच ऑफ दीस डजंट डिपेंड टेम्परेचर, व्हिच इज इजियर आई थिंक. ठीक है, गुड जॉब एवरीबॉडी. लेट्स गो नेक्स्ट वन. सानवी, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट. सानवी आराम से करो. Everywhere you may have some pressure. In my sessions, there is zero pressure. Okay. So, there is no hurry for you to give me an answer. If you're just attending the session, you're trying to understand, that is good enough. ठीक है. अगर आंसर समझ में आ जाता है, go ahead and give it. Okay. But make sure that is an answer you believe in. Okay. अगर आंसर नहीं आ रहा है, इसके बाद एग्जाम्पलर तो आपके पास है ही. go onto the internet, get exemplar, आराम से solve करो. या जो video I've given you, that also is extensive only. Maybe I'm going a little quick because I'm going by the pace of the majority of the students for answering. अगर मैं लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, tell me, I will explain. The goal is not for students to give me quick answers, but at least जो लोग live देख रहे हैं, they have this wonderful place to figure out with me how to get the answer, right? So use that, उसको use करो. Okay? तो जल्दी आंसर देने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है. जो समझ में आता है दे दो, नहीं आ रहा तो पूछ लो यार कैसे कर रहे हैं. ठीक है, अगर लग रहा है कर लेंगे तो बाद में देख लेना, कोई टेंशन नहीं है. सब एग्जाम्पलर के सवाल है, राइट. यू विल फाइंड देम एवरीवेयर. दीस आर नॉट वेरी यूनिक क्वेश्चंस. एंड में आएगा यूनिक क्वेश्चन. सिग्निफिकेंट फिगर्स डिलीटेड. सम्यक, जे एडवांस से नहीं हटा है, जे मेन से हटा है. हम लोग फोकस दोनों का कर रहे हैं. बहुत अनलाइकली कि जे एडवांस में कुछ चीजें आएंगी, बट सम्यक, हियर्स माय पॉइंट, राइट. सिग्निफिकेंट फिगर्स इटसेल्फ मे बी डिलीटेड, बट जो आप नंबर्स दे रहे हो, राइट, इन जेई मेन आपको जो आता है न्यूमेरिकल एंट्री में, यू नीड टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड राउंडिंग ऑफ. दोनों जरूरी है. ठीक है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर गेटिंग एक्सट्रीमली अनॉयड कि उन्होंने आंसर ये डाला, ये होना चाहिए, 0.1 0.2 होना चाहिए. वो सबके लिए जरूरी है. एनीवे, इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो 2 होगा ना. इसमें हमने बहुत टाइम पास कर लिया. वेदिका, यस. जेपलीन, यश, प्रियांशु, रिया, हिमांशु, नॉट 3 यार, इट विल बी 2. Oh no, significant figures. The only question you're able to solve. All right, Miss. That's good. Good job, Miss Lyrical. Good job. सही है. 2 decimal places. बिल्कुल सही प्रियांशु. 100 by 10 power 3. What is that, bro? मैं Lyrical बिल्कुल सही बोला. 2 था, बिल्कुल सही बोला. अगला वाला देखते हैं. Next question. Hydrogen gas is prepared in the lab by reacting dilute HCl with granulated zinc. This reaction takes place. Calculate the volume of hydrogen gas liberated at STP, standard temperature and pressure. Now, अभी हम लोग प्रेशर 1 बार लेने लगे हैं, ओके, नॉट 1 एटमॉस्फेयर, इसलिए वॉल्यूम हो गया 22.7. ठीक है. तो इतना रिएक्ट करता है बहुत HCl के साथ. 1 मोल ऑफ गैस गिव्स दिस मच. सो कैन यू टेल मी हाउ मच ऑफ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड जब इतना मास रिएक्ट करता है? ये वाला भी डुएबल है. वेरी डुएबल. बचपन से करते आ रहे हैं. यस यश. दैट्स अ टंग ट्विस्टर. यस, यू आर राइट. देखो, इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जितने भी मोल इसके होंगे उतने ही मोल इसके बनेंगे, बिकॉज 1:1 रेशियो है, राइट. बीच में 2 आ गया, 1:2:1:1 है ना, तो 1:1 हो जाएगा. और इसमें तो दिख ही रहा है ये 65.3 है, तो ये आधा होगा उसका, तो इसका आधा मोल हो गया. आधा मोल कितना होगा? अरे वेदिका ऑन फायर, जल्दी से तुरंत आंसर दिया. थैंक यू. या दैट्स ऑल.
आधा मोल H2 निकलेगा। आधा मोल मतलब कितना? आधा into 22.7 which is 11.35 liter. Excellent work. Fastest finger first time we're playing KBC. Yes, liters. We got it. Thanks, Verika. Good job. Any doubts in this? You are a straightforward, huh? Easy question. Yeah, doable. Shall we move on, Priyanshu? Yeah. If you want me to slow down, anything you don't understand, please pause me. Even if I've gone to the next question, tell me. Be open about it. Use this live experience for this process, okay? Because इतना time कोई तुमको देगा नहीं to solve exemplar questions. Because everybody internet पे सब चीज का solution है, चाहो तो देख सकते हो. But अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो मुझसे. पूछ लो. Yes, 11.35. Excellent, excellent. No, Priyanshu. No. All right, cool, I get it. If 4 gram of NaOH dissolves in 36 gram H2O, calculate the mole fraction of each component in solution. Also determine the molarity of solution. Specific gravity of solution 1 gram per mole. Specific gravity का मतलब होता है. This is a fancy way of saying density. मतलब 1000 gram in 1 liter. Same ही चीज है ना. श्रेय मिश्रा जी, हम तो खुशबू मैम नहीं है. हम थोड़ा बहुत मैथ कर रहे हैं. हम खुशबू मैम नहीं है. मेरा नाम आशीष है. श्रेय. If 4 gram of NaOH dissolves, JEE Advanced asks, no, Arul, these are exemplar questions. I'm going to do one interesting JEE Advanced related subjective questions towards the end of the session. After 10-15 minutes, हम लोग करेंगे वो. 10%, okay, lovely. Let's see. 90%, दो चीजें देते हुए प्रियांशु. Okay, molarity हमको दो चीजें दी. अच्छा, mole fraction of each component. Priyanshu, we give mole fraction in terms of fraction. मतलब 0.1 and 0.9 is what you're saying. And I want you to give me the molarity of the solution as well. ये तीन दो चीजें. इसको gravity क्यों बोलते हैं? सूरा साहब इसको gravity इसलिए बोलते हैं क्योंकि you compare it to the density of water. Specific gravity. Actually, specific gravity units नहीं होती है, as far as I know. Specific gravity units नहीं होनी चाहिए ना. Specific मतलब per this thing. एक मिनट. देखा जाए. Google बाबा से पूछा जाए. या फिर Bing बाबा जो भी बताना चाहे. Specific gravity units. It's because you're comparing it. Density compare करते हैं. Specific gravity same as density. You compare density of water. हाँ देखो वही तो बोला, units तो नहीं होती है इसकी. ये लो. श्रेय मिश्रा, मेरा घर है लोकेशन, आओगे क्या? This is specific gravity. श्रेय मिश्रा अगर और टाइम पास करोगे, you're going boss. Last time. 1/21 का मोल फ्रैक्शन है OH, 20/21 for H2. Okay. Sura Saab, here it is. It's okay, man. जिसको जो नाम डालना है डालने दे. उसको मैं Sura बुला रहा हूँ ना. Sura, this is specific gravity का definition. It should not have a unit. It is a ratio of the density of a substance divided by density of water. It should not have a unit. But ठीक है, इन्होंने unit दे दिया, अभी क्या करें? NCERT की जय. So, what are the number of moles? Moles होंगे इसके इतने, ठीक है? मतलब 1/10 और ये कितना हो गया? ये 2 moles हो गया. So exactly 1/21 and 2/21. Wonderful answer. 20/21. Sanvi, wonderful answer. 1.1 and 2 says Miss Lyrical. Okay. If you want to get a little specific, it's 0.05 and 0.95 ना. ये होगा 0.05, ये होगा 0.95. Correct है? Let's डालो 0.1 by 2.1. I feel it should be that. 0.05 और 0.9 approximately इतना आता है. ठीक है? अगर हम दो डेसिमल प्लेस में लेंगे, 2 decimal places, no, because significant figures is 2. नहीं, significant figures actually 1 है. ठीक है, छोड़ो, significant भी भूल जाओ. Molarity, moles of solute. This part is interesting. Vedika is saying 25/9 molar. Okay. Molarity जरा बताओ क्या होगा? Mole fraction. Wonderful. Rec. Molarity बोलते हैं 2.78. Okay. 2.78 is same as 25/9. 25/9 भी 2.78. हाँ, ठीक है, वही है. दोनों मिल रहे हैं, same. Vedika and Rec getting same answer. Okay. Yes, Zeppelin, absolutely. Priyanshu, बिल्कुल सही. Miss Lyrical, close but not that. 0.1 नहीं होगा. It will be 0.1 by 2.1. समझा? And 2 by 2.1. Those are the moles. Miss Lyrical, what you are telling me are the moles. ठीक है? And mole fraction क्या है? इसका mole divided by total moles. ठीक है? That is mole fraction. तो इसलिए it is 0.1 by 2.1. Good job. All right. So molarity कैसे निकाला जाए? Okay, let's do this. Hold on. 0.1 by volume. अब volume मेरे पास है ही नहीं. But I know the mass. Mass is 40 gram. अब मुझे ग्राम मिल गया यहाँ पे. ग्राम का मैं क्या करूँ? ग्राम मुझे निकालना है. ग्राम कैसे निकालूं? Multiply 1 gram divided 1 ml. अब मुझे ml नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लीटर. लीटर कैसे निकालूं? 1000 ml डालो, लीटर यहाँ पे डालो. ये हो गया तुम्हारा molarity. Agree or disagree? Do you agree or disagree with this?
Please tell me. This right here, everybody. Yeah, I know I'm being weird, but whatever. Deal with it. This is the moles and this is the mass, right? Total mass. Because my solution chahiye. I need the solution ka volume, not just the solvent. I need pure solution ka volume. हाँ रिया 2.5 not 2.78 थोड़ा ध्यान से मिस लिरिकल नो यू आर राइट यू आर ऑन द राइट ट्रैक थोड़ा सा आगे जाना था वन स्टेप फर्दर दैट्स ऑल वन स्टेप फर्दर डू यू फॉलो व्हाई आई हैव डन दिस या मैंने इधर फॉर्मूला तो लिख दिया बट डिड यू फॉलो व्हाई हैव आई डन दिस एनी डाउट्स हियर इट्स ओके रेक डोंट वरी अबाउट इट वेदोका गुड ऑलराइट कूल anybody else any doubts wonderful question no I think the reason you all got thrown off is because ये density 1 दी गई थी which is weird normally density 1.2 दिए थे 1.3 some weird number है they said density है भाई 1 which is not right मतलब 1 थोड़ी ना होगी यार अगर तुम 4 ग्राम NaOH डाल लो 1 से बढ़ जाएगी बट चोके छोड़ो बोल रहे माने तो ले लेते हैं 1 हाँ ये होना चाहिए solution that is the definition is what mole of solute by solution ka volume in liter and you will notice that I did not use any of those stupid formulae rho into this kuch nahi we did from units and dimensions that's the beauty about the first chapter all right great sur sahab beautiful question sur sahab इसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है मैंने कहा फॉर्मूले सी इन द लास्ट 40 minutes 37 minutes what formula have I used I have used only and only definitions what molality तो भी आया नहीं molality में solution chapter में कर लेंगे don't worry what have I used I have used a definition of mole fraction I have used a definition of molarity I have used a definition of density ये सब 10th standard से जानते हैं है ना कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया कैसे किया फिर मैंने बोला यूनिट से तुम डिसाइड करो किससे डिनोमिनेटर में डालना है न्यूमरेटर में डालना है ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है फॉर्मूला से डिसाइड करो हाउ व्हाई डिड आई डू 36 plus 4 because the definition is solution I have mass of solvent and I have mass of the solute दोनों को ऐड किया क्यों ऐड किया बिकॉज मुझे वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन का और ये जो 1 ग्राम पर ml है दिस इज 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन पर 1 ml ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी की यही डेफिनेशन होती है इसलिए मैं बोलता हूं कि ध्यान से डेफिनेशन पढ़ो उसके बाद कोई टेंशन नहीं कूल ओह सम्यक ब्यूटीफुल थैंक्स सम्यक Sanvi, no, NTA score is not same as percentile. Percentile मतलब मैथ्स का कॉन्सेप्ट ना कि that if you get say if you get 80 percentile मतलब 80% of all the people are below or you are better than 80% of the people ऐसा कुछ that's what percentile means you can look it up आपको जो मिला है is just a score like a relative grading sort of a thing you know percentile is something like a relative grading उस shift में they'll give you a rank in April तो अभी सोचने की जरूरत नहीं है ठीक है रैंक जो है अप्रैल में आएगी उसके थ्रू कॉलेज में रहेगा उसके बीच में जो भी हो रहा है इमटेरियल व्हाटएवर परसेंटाइल जो भी है देयर ऑल मिडिल स्टेप्स जैसे रिएक्शन होता है ना रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं तो परसेंटाइल और ऑल इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट व्हाट यू नीड इज अ रैंक इज योर फाइनल प्रोडक्ट रैंक से तुम लोग दिखोगे तुमको कॉलेज कौन सा मिलेगा ठीक है इफ दैट्स योर कंफ्यूजन अगला सवाल करें सुरा साहब मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया आई फील दैट थोड़ा सा यू शुड मैरिनेट विद दैट आइडिया एंड लुक एट माय अदर सेशन ऑन मोल कॉन्सेप्ट एवरी सेशन ऑन मोल कॉन्सेप्ट सेम आइडिया मैं देता हूं कोई फॉर्मूला नहीं हम यूज करेंगे वी विल नॉट मग एनीथिंग वी विल डू फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हमेशा ठीक है the reactant which is entirely consumed in reaction is known as limiting reagent in this reaction when 5 moles of A react with 6 moles of B which is the limiting reagent calculate the amount of C formed wonderful question isko try kar Riya sure Riya you can ping me Riya I think yeah or I don't know why I wrote Riya I was saying Riya you can ping me on this I'll try and help you out I teach Chem on Telegram or on Discord okay we can chat there I can help you out with that benzaldehyde conversion of benzaldehyde to what to benzene reduction very nice okay cool we'll talk about it on this thing organic is very interesting because you can figure it out with some sort of reaction mechanisms otherwise it can get very annoying I agree Himanshu says B is limiting Vedic also saying B bye Sanvi thank you so much for coming bye see you if you liked it do share this with your friends okay all right coefficient moles all right Imlon has got the trick coefficient by moles Imlon why do we do coefficient by moles कोई बता सकते हो can you help your friends out why do we do coefficient of moles देखो I have 5 I have 6 but for every 2 moles I have 4 moles of this which means for every mole I need 2 moles of this okay
So if I get it into this form 1 by 2, अब क्या करें मतलब for 5 I need 10, I don't have 10, so 6 gets used up. If 6 gets used up, कितना होगा उसका आधा, मतलब 3 of this guy goes, 3 of A gets used up, correct? This is a simple way of doing it, ठीक है? 3 of A gets reacted, कैसे मालूम? क्योंकि I have 5 and 6, and if I go into the simple ratio 2:4, I make it 1:2. मतलब if I go with 5, then I need 10, I don't have 10, so okay ठीक है यार, अब मैं 6 यूज कर लेता हूँ, 6 यूज कर लिया तो मतलब इसका बस 3 यूज हुआ, 6 of this, 3 of this, so what I have is 6 of this, 3 of this. So if I multiply, basically what I'm doing is I'm multiplying all of these with 3 by 2, right? 1.5 guna will I get this. Oh, so I get 9 by 2. That's it. That should be the answer. Let's see. I did the same thing what you guys said. Hey Ratlavesh Praveen, B is limiting reagent, 4.5 moles of C. Absolutely. Yeah, वही I've done the same thing where I've just, जो मैंने बोला ना 1:2, that is the same thing I've done by dividing this by 2, right? It's the same as doing 1:2 and then saying 5 by 1 and 6 by 4, 6 by 2. It's the same thing as that, exactly same चीज है. तो ये whatever number is smaller here is the limiting reagent. Okay, limiting मतलब it gets used up faster. This is the same as saying 1:2. If I have this, then this will get used up completely, है ना? ठीक है? Solutions class 11, you're right. ठीक है. After I get this, कितना बना फिर? 6 by 4 into 3, which is 18 by 4, which is 9 by 2, which is 4.5 mole. Good job, everybody. Good job. अगला सवाल करें. अब करते हैं assertion reason questions, जो बहुत आए थे JEE में. The empirical mass of ethene is half its molecular mass. Easy peasy, Shrey. All right. Time out हुआ, लगता है आप शांत हो गए. अच्छी बात है. Focusing on this. सवाल आंसर तो बता Shrey. Empirical mass of ethene is half of its molecular mass. The empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. ज़्यादा simple हो गया. Try करो. Yes, Japolin, good job. What do you guys think about this one? You literally need to know ethene hai kya. I don't know why I got this question for you. I think I was just writing it down. I was like, let's keep it, and I just kept it. Yeah. This is a bit easy. Yeah, dude, A is the answer for this. इसमें तो सोचना ही नहीं है, है ना? CH2 becomes CH, which is this, and sure. Good job, everybody. Himanshu, Rek, Ria, Japolin, good job. अगला सवाल करते हैं. Next question. Thank you, Shrey. Yes. Significant figures for 0.200 is 3, whereas for 200 it is 1. Reason: 0 at the end or right of a number are significant provided they are not on the right side of the decimal point. Aye? What do you think? Ethene. मैंने उल्टा लिख दिया क्या? Emlon, you are right. I think मैंने गड़बड़ लिखा. Emlon, you are absolutely right. I messed up. Boss, ये क्या लिखा मैंने? C2H4 था, ethane. मैंने ethine लिख दिया. Emlon, you are absolutely right. Ethene is C2H4 that becomes CH2. Yeah, you guys are absolutely right. Sorry about that. कॉम्प्लेक्स भाई साहब, अरे बाप रे, आपने दर्शन दिए, हम धन्य हुए. आप बहुत महीनों बाद दिख रहे हैं भाई. Wow, are you serious, bro? That is insane. Look at this. I'm gonna share this with my friends at Aakash Byju's, because you've been with us for a long time, right? I'm gonna share this with our friends, the team. They'll like to hear this. Thank you so much for telling me about your score. Lovely to hear this complex bhai sahab. I'm gonna share that with the team. So yeah, please let me know. Is a regular student. All right. So, इसको कैसे करेंगे? Where is the chat? Ankita, yeah. Oh, you're from this thing. What? Trick for limiting reagent. अरे अरुल कुमारन, अभी तो बताया था मैंने. Complex, thank you for coming here. मैंने डिलीट कर दिया, मुझे लगा मेरा गलत है. अरे नहीं अमलान, बिल्कुल सही बोला तूने. Riya saying 3, भाई साहब respect complex. Absolutely Samad. Arul, I told you the trick, right? You divide. You have say x, you have y, and I have say m and n. So you do x by m, or rather, you do m by, this is x times x plus y times y gives something,
and have these many actual moles. Okay, your trick is this: you do m by x and n by y. Whichever is larger, that gets used up. That does not get used up. Whichever smaller is the limiting agent. Yeah, small. That's it. You can check those things, their tricks from anywhere. The tricks are not important, right? मैंने तुमको बताया first principle से कैसे करना है, right? This is the same as saying I divide everything by x and I get 1 here and I get y by x. ठीक है? अभी x y से तुम लोग confuse हो गए यार. इसको छोड़ो. Watch that again, यार Arul. What I did just before, उसको देखो. I have already told you a trick. I'm not going to go over that again. I think you get confusing for the rest of you guys. All right. Yeah. Lot of respect. Himanshu saying 2. क्यों भाई? Complex. हाँ अभी advanced पे focus करो. Yeah, no sense of being exactly complex. क्यों करोगे? Stick around, complex. I have a very interesting question coming up just in 2 minutes. Some people are saying 4. Okay, let's see. A वाला तो true है, right? This has one significant, this has 3, this has 1. But this is not right? 0 at the end. If I have 0.200, these are significant. But 0, 2, 0, 100, none of these are significant. ठीक है? तो इसीलिए they are not on the right side of decimal point. सही नहीं है. ठीक है? They are significant provided they are on the right side of the decimal point. Not they are not. ठीक है? इसलिए A is true but R is false. What I feel. आप लोग बोल रहे बोथ दोनों false है. दोनों क्यों false होंगे? Why will the first one be false? Can you tell me? पहला वाला false क्यों होगा? Is it because you're saying that 200 is a finite number, hence infinite होगा? I think that is for numbers like 5 and 4. उसका जो है, they don't have significant. They have like infinite significant figures, right? But 200 के लिए it will be just 2. Yeah. Okay. Cool. All right. Great. Let's move on. Cheese. What's up, Cheese? Prismatic. Good to see you. Okay. So how about this? Since we have थोड़ा बहुत कम time left, I feel like I want to do this fun question with you first. ये वाला बाद में करेंगे. We'll do this later if we have time. This one's not important. I have this one, not this one's the fun one. Since you guys are here, this is what you've all been waiting for. This is what you've been waiting for. Read this question. It's a very nice question. Complex भाई हो यहाँ पे try करो. This is the JEE Advanced question I was talking about. ठीक है? I told you that I'll start it around 7:15 and 7:17 हो रहा है. It's a good time to start this question. Try करते हैं. 200 is the exact number. But I think because it has that, yes, ठीक है, we'll think about that. I think it should be 2, which is 1. Well, sorry, just one significant figure. We'll talk about that. So there are 3 students, Lalita, Satya and Govind. Shout out to Satya ji from Discord, who's an awesome maths teacher. He's been called Math Einstein and Euler something and also somebody else light. Anyway, Satya ji. Govind were asked to find the identity of a metal in a sulfate salt. They dissolved the salt in water and added a lot of barium chloride, causing it to precipitate barium sulfate. ये उसका टेस्ट भी है ना. This is a test for chloride ions. You put this thing and you get sulfate, right? Sorry. A test for sulfur. A test for sulfate is to add barium ions to it. अगर precipitate हो गया तो most likely यही. Then they filter and dry this. The sample weighed 0.147 initially and the final precipitate weighed 0.233 gram. 0.233 gram है barium sulfate का. ठीक है? और initial sample where I don't know उसमें क्या है उसका ये mass है. And this is the fun part. This is where the things get interesting. ललिता को लगा कि ये टाइटेनियम, सत्या को लगा कि सोडियम है, गोविंद बोल रहा है कि भाई ये गैलियम है. अब who is right? क्या हो रहा है? How is it possible that they all got 3 different things? कैसे हुआ ये? And who is right here? Let's do this. ये है JEE एडवांस का सवाल. यही तो फोकस है. आइडोमेट्री में इसलिए करते हैं क्योंकि it's not this thing. It's a good question. Complex. Okay. The reason is that there is, I think what you're talking about is कि दोनों oxidation और reduction same species का हो रहा है. Is that what you're talking about? Yeah. All sulfate is soluble except barium, strontium, and lead. How do you do this? White precipitate. Okay. Euler fanboy. Oh, that's him. Euler fanboy. Yeah. Fanboy with an I. So what? But पहली बात एक बार बताओ. We'll talk about that complex. We'll talk about that. Let's do this question quickly now. We'll talk about that. How on earth did Lalita, Satya and Govind get 3 different answers? And are they all right? या फिर किसी ने कुछ assumption में गड़बड़ी की? Think about it. It's 7:19. I'll give you a minute to think about how to start this question. Whatever comes to your mind, बताओ. Just let me know how to start this question. वो शुरू कैसे किया जाए? ठीक है? इसमें 2-3 चीजें करने की. पहली बहुत simple चीज, how do we start this question? Tell me. Think about it. फिर we'll analyze it. It's a wonderful question. Try it out. ट्राई करो.
I have a keyboard here. I don't know why I'm doing that. Hold on. Okay. Yeah. You don't have to do this. Mr. Shekhar, that's okay. Maybe it's a complex. No complex. कुछ नहीं है. This can be done just from mole concept. सिर्फ cation और salt different है. सम्यक. Okay. Good point. Cation अलग है. Sulfate तो sulfate है. ठीक है. बताओ कैसे करोगे? Complex भाई. थोड़ा help करो. So I'm just thin slicing this. एक जगह लिख रहा हूँ. 0.147 gram of salt was dissolved in water. BaCl2 was added to it. BaSO4 PPT was formed. ठीक है. Final PPT weighed this much. And ललिता बोल रही है कि टाइटेनियम है. सत्या बोल रहे हैं सोडियम है. गोविंद बोल रहा है कि गैलियम है. सबके मासेस दिए हैं. What formula did each student assign to the salt? And और कौन से टेस्ट आप कर सकते हो जो फिगर आउट कर सकते हैं. तो उन तीनों ने गड़बड़ी नहीं की. उन तीनों ने कुछ assumption किया which was interesting. कैसे किया? कैसे किया? By equivalence. रिया कुछ equivalence कुछ जरूरत नहीं है. बहुत straight forward. Okay. Let me help you a bit. I'll wait some minute. करो. Here is what the equation generally will look like. Some random, I don't know anything. मुझे बस मालूम है कि सल्फेट MX सल्फेट Y ये है. अगर ये है तो उसका Y बेरियम बनेगा और Y BaSO4 बनेगा. ठीक है. इसलिए मैंने Y और Y यहाँ पे लिखा है. एंड XMZ प्लस बनेगा. I don't know anything. Skeleton equation मैंने लिख दिया. I don't know anything. मैंने skeleton equation. What do you think I do next? Okay, complex. Can you tell me, can you go in a little bit of detail? What did Lalita do? Lalita ने क्या किया, सत्या ने क्या किया, गोविंद ने क्या किया, so that they got titanium, sodium and gallium. कैसे उनको ये सब पता चला? How do they do this? I know the moles. Let's talk about Lalita first. I'll give you another minute. Or try करो because Samyak said wait, so let's try. Let's wait. Let's just wait for him to figure it out. I'll wait. I'm not in any hurry. मैं रखा 15 मिनट इस सेशन का just for this question. 15 मिनट 10 मिनट whatever. आराम से करेंगे. So that's the goal, right? Towards the end of this, we will do some interesting JEE Advanced type के सवाल. That was the goal. Excuse me. Okay, कौन क्या बोल रहा है? Moles check, stoichiometry, valency. Okay. Question back कर दो sir. This is it. Complex. You don't need anything else. मैंने पूरा question यहाँ पे लिख दिया है. अगर question आपको फिर से पढ़ना है तो here you go. But this is thin sliced. पूरा सवाल एक बार है यहाँ पे लिख दिया. देख लो. Try it out. Okay. What do you guys think? क्या लगता है आपको? सूरज साहब मैंने बोला एडवांस का है. अगर ज्यादा लग रहा है तो इट्स ओके. जस्ट चिल. जस्ट एंजॉय द शो. यश वेरी इंटरेस्टिंग. यश वेयर डिड वी गेट दीस थ्री फ्रॉम? ओके यश, नाउ वी आर गोइंग समवेयर. यश बोल रहे हैं कि ललिता ने अस्यूम किया, लेट्स से ललिता ने अगर अस्यूम किया कि Ti2+ है, लाइक यश से, तो TiSO4 प्लस Ba2+ विल गिव मी दिस. अगर ऐसा हुआ तो नाउ हाउ मेनी मोल्स ऑफ BaSO4 डू आई हैव? दैट आई कैन गेट. बेरियम का मास है 137, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 64, राइट? so इसको ऐड करो 233 हो गया. तो आई हैव 1 मिलीमोल ऑफ BaSO4. इफ आई हैव 1 मिलीमोल ऑफ BaSO4, दैट मीन्स कि 1 मिलीमोल ऑफ TiSO4 आया था. इससे I can get the molar mass of this compound. If molar mass is close to that of this actual molar mass, then हमने सही काम कर रहे हैं. Listen to me one more time. I have assumed something. I have assumed TiSO4. फिर मैं अगर लिखा ठीक है stoichiometry के हिसाब से 1 मिलीमोल बना, then I get the molar mass of TiSO4. If the number that I get is close to the actual mass of TiSO4, then the assumption सही था. At least first step के लिए this is good. That is what we are doing right now. And look at this. Wonderfully, the molar mass of this is actually 147 gram per mole according to this. Experimentally ये है और theoretically भी यही है. Theoretically it is closed. It is not the same. It is closed. Yeah, 48 of ये titanium, 32 of sulfur, 64, 144.
सो 141 काफी क्लोज है. सो लुक्स लाइक ललिता वाज ओके. दिस वाज ललिता लॉजिक. नाउ वी फिगर ललिता का लॉजिक क्या हो गया. या कॉम्प्लेक्स, दैट्स अ फोकस, राइट. जेईई एडवांस कर रहे हैं तो ठीक से करेंगे. ओके, क्लोज है, क्लोज है. दिस वाज द आइडिया दैट ललिता केम अप. ठीक है, अब देखते हैं इसी तरीके से. लेट अस सी कि सत्या ने क्या किया. सत्या जी ने क्या किया. देखो, सत्या जी ने किया Na+ हो गया. अगर Na+ हो गया तो Na2SO4 हो जाएगा, है ना. एक सेकेंड, मनन जी सेशन में हूं, आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं, ठीक है. तो Na2SO4, ओके. सत्या जी ने बोला कि Na+ मतलब Na2SO4 हो गया. अब इसको बताओ क्या होगा. इज दिस कूल. 144 रिया पूछा बोली थी. कॉम्प्लेक्स भाई बताओ तो, इज दिस करेक्ट. Na2SO4 सेम तरीका जो किया. फ्रॉम दैट आइडिया कैन यू टेल मी इफ दिस एनालिसिस इज ओके. जो मैंने अभी किया ना, आई स्टिल हैव 1 मिलीमोल ऑफ दिस गाय बीइंग फॉर्म. मतलब बाय स्टोइकियोमेट्री कितना होगा ये निकालना है. इसका स्टोइकियोमेट्री से भी 1 मिलीमोल आ जाएगा, ठीक है. व्हिच मींस मोलर मास क्या होगा. आई वांट एक्सपेरिमेंटल एंड आई वांट थियोरेटिकल. ये दोनों क्या होंगे. कैन यू गाइस टेल मी. जस्ट ये दो वैल्यू है. थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल मास कितना होगा. कैन यू टेल मी, बताइए प्लीज. Complex, to answer your question, I think iodometry में there is a possibility of this I3 minus ion being formed, right? Triadded ion. इसीलिए so you have IO3 minus and something else reacting to give this. So basically it's conproportionation हो रहा है. Disproportionation, conproportionation. So it makes more sense to do that. If you want to do क्या बोलते हैं इसको equivalent weight, you can, but it's a little complicated. That's all. है ना? That's all. Can you tell me these values? Theoretical, experimental. यहाँ पे भी क्लोज आ रहा है. मोलर मास सेम आएगा 147 ग्राम पर मोल, राइट. बिकॉज आई हैवंट चेंज एनीथिंग. 1:1 था, 0.147 ग्राम था. मिली मोल वाज दिस. एंड लुक एट दिस, ये 46 हो गया. 23 into 2 which is close to titanium which is 48 ना. 48 ये 2 हो गए प्लस 32 6 142 1. काफी क्लोज है. ये लॉजिक था सत्या का. लग रहा है सत्या भी सही थे. क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें. गैलियम का देखो, गैलियम का देखते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. 0.124 एग्जैक्टली दिया, एग्जैक्टली दिया. गैलियम इज अ 3+ आयन. एल्यूमिनियम के नीचे आता है ना. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, सेम फैमिली. कंफर्टेबल है ना. गैलियम 3+ बनाएगा. अब थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग. आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. अब थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग. गैलियम सल्फेट का होगा ये फॉर्मूला, विच मींस कि अगर 1 मिलीमोल बेरियम सल्फेट बना, मतलब 1/3 मिलीमोल ऑफ गैलियम सल्फेट गेट्स यूज्ड अप. गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज ओके. ये जो मैंने लिखा है ठीक है. गोविंद जी, एग्जैक्टली. गोविंद जी तो भगवान का नाम है ना, तो इसलिए एक रख लिया. विल डिस्प्लेस. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. बेरियम सल्फेट, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. रिया आस्क अ वंडरफुल क्वेश्चन. BaSO4 will it displace. Barium sulfate का KSP value is so low that the equilibrium really wants to be, towards this. मतलब कि अगर if I have Ba2+ and SO4 3- in solution, they will like to combine. उनका K value is so high that they will always form BaSO4. And barium is obviously more reactive than gallium. उसमें तो कोई चक्कर है. Good question, yeah, good question. This fine? Okay, good, good. This is okay, right? 1/3 millimole ये हो गया, 1 हो गया. अब इसका मोलर मास क्या होगा, अलग होगा. It will be 3 times 147, right? Because अगर 1 मिलीमोल ले रहे थे तो मास हो रहा था उतना. अगर 1/3 मिलीमोल है, सेम मास में 0.147 ग्राम. दिस इज नॉट चेंजिंग, नो. मैंने 1.47 लिया, 441 हो गया. नाउ लुक एट दिस, दैट इज एक्सपेरिमेंटल. थियोरेटिकल देखो, थियोरेटिकल मास फिर से क्लोज हो गया. लुक एट द थियोरेटिकल मास. 72 + 96 × 3 428. इट इज अगेन क्लोज. अरे यार, अब तीनों बोल रहे हैं, तीनों सही है. अब क्या करें. या एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाट डू वी डू. तीनों लोग सही हैं. नाउ व्हाट डू वी डू. अब आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें जो हमको याद करनी पड़ेगी. सबसे पहली बात, ठीक है, अभी इसको लिख लिया. सब गोविंद, ललिता, सत्या तीनों लोग सही हैं. उनके हिसाब से सही है, बिकॉज दे हैव डन दिस कैलकुलेशन एंड आई हैव आल्सो कन्विंस्ड यू कि यार द कैलकुलेशन सीम्स गुड. बट अब चक्कर क्या है, सबसे बड़ा चक्कर. पॉइंट नंबर 1, Ti2+ नहीं होता है, Ti3+ होता है. Ti3+ होता है और वो हरा होता है. पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन. ये दोनों है सफेद. Ti पहले 2+ होता ही नहीं है, 3+ होता है. ठीक है. यू मे बी सेइंग 2+ होता है, क्यों नहीं होता है. टाइटेनियम क्या होता है, व्हाट इज टाइटेनियम. स्कैंडियम, टाइटेनियम, नहीं सॉरी, स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम. नोबडी क्वेश्चन दिस, बट ठीक है. अगर थोड़ा सा
attention pay करते, maybe you would have tried out. So 3d3 4s2, correct? 3d3 4s2 is this guy right here, titanium, argon 3d3 4s2. So 2 plus ion seems like it's valuable, but it is not. It is weird. I'll show you. मैं JEE का दिखाता हूं आपको. Not stable at all. 2 plus not stable. 3 plus चलेगा, 4 plus चलेगा. 2 plus भाई नहीं है stable. ये मैंने गलत लिखा क्या? स्कैनेडियम एक और बीच में आता है क्या? वैंडियम, स्कैनेडियम. I feel like टाइटेनियम के बीच में और कुछ आता है क्या? Is it right thing? टाइटेनियम में कुछ गलत, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनिडियम. अच्छा, टाइटेनियम पहले आता है. हाँ, मैंने गलत लिखा. टाइटेनियम, वैनिडियम. सॉरी मेरे दोस्तों. सॉरी, माफ करना. 3 मैं लोगों रेक, थैंक यू. मैंने कुछ उल्टा लिख दिया था. एनीवे, लग रहा था कुछ. एनीवे 4s2 फिर भी लगता है स्टेबल होगा क्योंकि डी ब्लॉक में 2 प्लस होता है, बट नो, नॉट इन केस ऑफ टाइटेनियम. इट इज वियर्ड. Ti3 प्लस इज मोर स्टेबल. इट इज ग्रीन एंड सो इसका फॉर्मूला अलग है. अगर फॉर्मूला अलग हो गया तो इट इज सिमिलर टू दिस, व्हिच मींस कि द होल थिंग डज नॉट वर्क. राइट नाउ द मास आल्सो विल चेंज बिकॉज आई विल हैव 1/3 and all of that. So I will expect the mass to be 441 gram per mole, but it is not 441. This is experimental, right? And theoretical mass कितना है? It is not that. It is titanium 2. मतलब कितना हो गया? 48 into 2 is 96 plus 96 into 3. मतलब 300 के आसपास. नहीं, कितना हो गया? I'll shamelessly choose 96 into 3 plus 96. 384. देखो, ये हो गया 384. This is very far apart. 384 है actual, but experimental है 441. तो it is not this for sure. So ललिता ने जल्दबाजी में गड़बड़ी कर दी because of this. Because maybe she forgot this. Even we did not know. 2 plus होता ही नहीं, 3 plus होता है. I'll show you that. I'll show you a nice snippet from JEE that will tell you कि टाइटेनियम भाई साहब देखो थोड़ा छोटा लग रहा होगा. Maybe I can zoom in a little bit. Zoom हो जाओ, zoom. Look at this. Okay, look at this. Read this line ध्यान से. The oxidation state plus 3 is reducing and Ti3 plus ion is more strongly reducing than Sn2 plus. बहुत strong reducing है. नीचे देखो, the 2 plus is unstable also, but strongly reduces, that reduces to water. ठीक है. So the point is कि they are reasonably stable. 3 plus reducing है but it's stable. 2 plus तो बहुत unstable है. 3 plus होने के chances ज़्यादा थे. 4 plus तो नहीं होता है. 3 plus is the most likely oxidation state of titanium. That is proof from JEE. गैलियम के बारे में बात करेंगे. Don't worry. That's the next part. The next part after this is जब टाइटेनियम नहीं हुआ अब क्या करें? अब गोविंद और सत्या के बीच में कौन सही है? Looks like दोनों सही हैं. ठीक है. But I can still differentiate. I can differentiate by adding NaOH. By adding NaOH मैं पता कर सकता हूं कि whether it is, and we are going to leave this like one of those interstellar movies, right? We don't know what happens in the end. So इनके हिसाब से दोनों सही हैं. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर आप NaOH डालोगे पानी में तो एक होगा प्रेसिपिटेट, दूसरा कुछ नहीं होगा. If you put NaOH, this is dissolved. ये बन जाएगा PPT. How do you form a PPT? Just like aluminium. गैलियम क्या होता है? थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल है, बाद में देख लेना. गैलियम आर्सेनाइड लेजर वेजर बनता है, फैसिनेटिंग चीज है. But main thing is this, right? Just like aluminium, I'm going to zoom in here. Just like aluminium, गैलियम भी ये रिएक्शन देता है, PPT देता है. ठीक है? It forms a presentation. What am I saying? It forms a precipitate. Presentation. Wow, that was a new one. So this forms a PPT. Yeah, gallium 3 plus NaOH will form a PPT. ठीक है? That's it. That was the question. Thank you all for sitting. Vanadium is 4. Yes, you're right. Plus 3 more stable. Yes, Rick. Awesome. Thank you. Coordinate, have we skipped this question? Yeah. All right, cool. So yeah, that was the one advanced question. If you guys like this question, tell me. I'll bring more such questions for you because a lot of students wanted me to prepare them for JEE Advanced exam. This is my style of doing it. I'll give you one question, but इतना बढ़िया सवाल होगा कि दिमाग घूम जाएगा और मजा आ जाएगा. ठीक है? Yeah, good. Glad you liked it, Rick. मैंने बनाया नहीं है. I'm not taking credit for it. I flicked it from a nice resource. I changed numbers. That's what it is. Make questions really hard. ठीक है? I hope you guys enjoyed this. If you want more questions like this one specifically, please leave a comment at the end. Yeah, because this is an experiment, right? If the experiment works, मैं हर session में करूँगा. But if you guys don't want it, you want to just exemplar questions, we'll do that as well. जो आप बोलेंगे, सर आंखों पर. That's the goal. I hope you enjoyed the session and share this with your friends if you did. ठीक है? And any feedback is most welcome on the chat or on the comment section, or you can ping me on I Teach Chem and we can chat about it there on Telegram or on Discord. Fun, right? I like making this question. मुझे मजा आया. कुछ थोड़ा effort लगा, but it was fun. Okay, Rek, thanks. P block elements with SFL form complex. Yeah, sure. Absolutely. All right.
Okay, cool. If you like this question, after the video gets done, comment में डालो. It will help me convince the manager कि यार they like this question. Let me do more of this. Otherwise, we'll do exemplar if it's. ठीक है. मिलते हैं हम लोग थर्सडे को. Atomic structure करेंगे. पढ़ के आना atomic structure के सवाल. ठीक है. We'll do maybe one question like this and बाकी exemplar. See you all. Thank you so much for your time. Bye bye. Have an awesome Tuesday. And जिन लोगों का JEE महीने का एग्जाम था, टेंशन ले रहे हैं, मत करो यार. It's okay. You will get through it. Focus on process. Result किसी के हाथ में होते नहीं, भगवान के अलावा, है ना? Take care. Okay. See you all. Bye. Thank you so much for your time.